Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चा. Today we are moving to the third lecture of group 16. Oxygen we have done last time. Now today we are going to start, as you can see it on the board, ozone. Ozone का पहले मैं आपको introduction और uses. I always start with uses and introduction so you understand what we are doing, and then we are going to do the preparation and other properties. Introduction में ज़्यादातर मेरी physical properties भी आ जाती हैं. So important physical properties also I added over there only. Everyone knows ozone is one of the allotrope of oxygen. One is dioxygen, another is ozone. It is the unstable form of or unstable allotrope of oxygen. Second thing we all know, it is present somewhere 20 km above the earth's surface in the stratosphere, and this is mainly protecting us from harmful ultraviolet rays. So it is preventing us from different types of cancer. That may be a leukemia, skin cancer, which you all have heard of. Australia is facing that problem because of ozone hole. Antarctica, ozone hole है, of course वहाँ पे population is not there, density is not there, so not a problem. But Australia, big problem as far as skin cancer is being concerned. That's why you will find in number of cricket games or Australian people, they always use the sun cream SPF greater than, sun protecting factor greater than 50. Reason is ozone layer is depleting down, and some holes are also being observed in few months of the year. Then you are going to find very important point number 3. It's a pale blue gas, right? But if you are going to liquefy it, that means you are going to condense it into liquid, it becomes deep blue liquid. तो कलर याद रखना, मेनली नीट वाले. और इसको अगर आप सॉलिडिफाई कर देते हो तो कलर एकदम चेंज हो जाता है. अंडरलाइन किया है वायलेट ब्लैक. सो प्लीज रिमेंबर इट टर्न्स वायलेट ब्लैक. हैवियर देन एयर, ऑफ कोर्स. व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ एयर? 14.4 जो O2 की है. सो इट इज गोइंग टू बी हैवियर बिकॉज इट इज 3 ऑक्सीजन एटम्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द टेस्ट, इट टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू. जो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन में याद रखना है. एज फार एज यूजेस आर बीइंग कंसर्न्ड, वेरी वेरी सिंपल यूजेस आर देयर. ओजोन is mainly protecting us from harmful UV rays. That is of course the natural use of it. But when you are talking about ozone, तो सबने ozonized water पढ़ा हुआ है. हेमा मालिनी की एड, कैंटारो भी बताया था मैंने in my solutions and colligative properties. Ozonized water means it acts as disinfectant and germicide in purification of water. Then it is used as a bleaching agent also for bleaching oil, flour, starch, etc. Also you can use it. तो bleaching property भी देखेंगे when we will study chemical properties. And it is used to purify air mainly in overcrowded areas like cinema halls. There ozone is used to purify the air. Then in underground stations, then your airports, so there it is being used mainly to purify the air. So I think introduction and uses ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, is clear to everyone. Please copy it down. Now let's talk about the next 2 points. Next 2 points are talking about ozone layer depletion and the structure of ozone. Everyone knows ozone layer is slowly depleting down, and 2 most important factors who are responsible for it are oxides of nitrogen and chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon we have already started not using in industries. रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता था, कूलेंट्स में यूज होता था, एरोजोल्स में यूज होता था. तो नाउ वी हैव स्टॉप्ड. एंड ऑफ कोर्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो वेरी कॉमन. जेट प्लेन से भी निकलता है ये. सो दैट इज आल्सो डिप्लीटिंग द ओजोन. एंड ऑफ कोर्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आल्सो कम्स आउट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, एक्सेट्रा. ठीक है, तो दैट वी हैव टू कंट्रोल इट. नाउ दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच यू हैव टू नो. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में NO अगर रिएक्ट होता है O3 के साथ, इट कन्वर्ट्स इनटू NO2 एंड O2 is formed. That means ozone is depleted down. And same thing chlorofluorocarbon में, chlorofluorocarbon you are going to find CF2Cl2 जब ब्रेक होता है तो it gives you first free radical of chlorine, and that free radical of chlorine is going to react with ozone and forms the ClO dot plus O2. तो यहाँ पे भी depletion हो रहा है. And of course
Ozone depletion, as I have told you, is responsible for number of diseases, and of course going to cause skin cancer, leukemia, as I have already told you. स्ट्रक्चर पे जाते हैं जो आपने 11th क्लास में भी किया है, टू फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम. ओजोन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो O is mainly over here. This oxygen, if you see, खुद के 6, 7, 8, यहाँ पे खुद के 6, 7 ही हो रहे. इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड आना जरूरी है. सो वी ऑल हैव टू नो कि अगर यहाँ पे हम लोग एक को डबल बॉन्ड देते हैं तो यू आर गोइंग टू फाइंड द अनदर वन इज गोइंग टू एग्जिबिट व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. दिस इज ऑक्सीजन, खुद के 6, 7, 8. ऑक्सीजन के बाद ऑलरेडी लोन पेयर थी, दैट लोन पेयर इट इज कोऑर्डिनेटिंग विद अनदर ऑक्सीजन. सो उसके खुद के 6 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. सो एवरीवन इज हैप्पी. एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बन सकता है. यस, इसको इधर पे घुमा दो, डबल बॉन्ड को उधर घुमा दो, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू फाइंड दैट ओजोन शोज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स. बट फाइनली आपको यही स्ट्रक्चर याद रखना है. द बॉन्ड एंगल इज 116.8 डिग्री, 27.8 picometer, which you all have to know is the bond length of each oxygen bond length is 127.8 because it shows resonance hybrid. And we all have to know it gives the angular or bent shape. याद रखना है, angular or bent shape it has. So please copy down and then we go for the preparation. Now let's see the preparation of ozone. Ozone is prepared from oxygen in the presence of silent electric discharge. Okay, and what we are going to get it is 2O3, and delta H is equal to, you are going to get somewhere plus 285.4 kilojoules. So it is which reaction? Endothermic reaction. As it is endothermic reaction, we are going to find large amount of heat is evolved. So why we are using silent electric discharge? What is silent electric discharge? It is the discharge tube where you are going to find that the whole process is going to take place at a very very low temperature, so that the decomposition of ozone does not take place, otherwise it will be back converted into what? O2. तो ये बात सबको याद रखनी है. That is silent electric discharge. It was given by the scientist called Siemens. Siemens का नाम सुना हुआ है आपने. Siemens की बहुत सारे electrical appliances है. So this whole reaction takes place in an apparatus called Siemens ozonizer. नाम याद रखना है, Siemens ozonizer. Is that clear? As far as silent electric discharge tube is concerned, it is also known as sparkless electric discharge. Sparkless. तो दूसरा नाम है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिकॉज इट प्रिवेंट्स मेनली लोकल राइज इन टेम्परेचर. प्रिवेंट्स लोकल राइज इन टेम्परेचर. और प्रिवेंट्स लोकल राइज इन टेम्परेचर से क्या होगा? इसका उल्टे डायरेक्शन में डिकम्पोजिशन होने से बचेगा, and you are going to get the ozonized oxygen. क्या बोलते हैं इस ऑक्सीजन ओजोन को? Ozonized oxygen. Only 10% you are going to find the converted into ozone. Only 10%. So this is called ozonized oxygen. So these are few points which everyone has to know. अब यहाँ पे एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि यहाँ पे तो आपको 2 moles of O3 की इतनी एनर्जी है, अगर 1 mole का ओजोन बोले तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू गेट 142 point whatever, right? So that is going to be the answer for 1 mole of ozone formation. So that is important point already asked in entrance.
And okay, so this was about the preparation of ozone, mainly from an apparatus called Siemens ozonizer. 3 moles of oxygen liya, converted into 2 moles of ozone. Reaction is called endothermic. How much amount of heat is absorbed? 285.4. And please remember what is silent electric discharge tube. It is a sparkless discharge tube which prevents local rise in temperature to prevent the decomposition of ozone back into O2. So please copy it down, and then we'll go for the next part, that is chemical properties of ozone. Now let's talk about the chemical properties of ozone. Now when we are talking about ozone, mainly ozone acts as mainly the oxidizing agent and better oxidizing agent than oxygen. Okay, and ozone की जब हम लोग बात करते हैं तो I have told you that mainly it is going to react with metals also, with non-metals also as an oxidizing agent, and with some compounds also. और इसमें सबसे important reaction है tailing of mercury, जो ये साल ISC के पेपर में आया था. So that I will explain it to you. What does it mean? So let's see all the chemical properties one by one. यहाँ पे आपको simple form में reactions याद रखने. Ozone if undergoes decomposition, अगर ozone decompose होएगा somewhere at 573 Kelvin in the presence of manganese dioxide or palladium or platinum as a catalyst, you will get oxygen back. Okay, and we all have to know कि catalysts are mainly we are using it so that the temperature is going to be reduced down, otherwise temperature high रहता है. H2O2 अगर O3 के साथ रिएक्ट हुआ, अब इन मैक्सिमम रिएक्शंस में एक चीज याद रखोगे आप, जितने भी आप रिएक्शंस देख रहे हो, जितने भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड पे आपको O2 ही मिल रहा है. ये दिमाग में फिट कर लो दैट ट्रिक. एवरीवेयर यू आर गेटिंग O2, ओके, एक्सेप्ट दिस वन. तो H2O2 O3 के साथ हुआ या बेरियम पेरोक्साइड हुआ, यू आर गोइंग टू गेट वाटर प्लस O2 और बेरियम ऑक्साइड प्लस O2. तो O2 मिलना कंपलसरी है. अब कोई भी एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, बेंजीन हुआ, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ओजोन. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? ओजोनाइड. ओजोनाइड क्या होता है सबको मालूम है, आपका CH2 का डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा एंड यू गेट ओजोनाइड. सो दिस इज कॉल्ड योर इथिलीन ओजोनाइड. वैसे एसिटिलीन के साथ भी होता है रिएक्शन, वैसे ही बेंजीन के साथ भी होता है. सो एवरीवन हैज डन दैट इन 11th क्लास. तो भी मैंने आपको एक रिएक्शन दिखा दिया, दैट इज विथ इथिलीन एंड इट इज कॉल्ड इथिलीन ओजोनाइड, जो बाद में जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है एंड यू आर गोइंग टू गेट 2 molecules ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ओवर हियर. इज इट क्लियर? उसके बाद जाते हैं ब्लीचिंग एक्शन. ब्लीचिंग एक्शन 2 ही रीजन से होता है, मेनली आइदर इट इज गोइंग टू बी ड्यू टू ऑक्सीडेशन और ड्यू टू रिडक्शन. तो ब्लीचिंग एक्शन में O3 is broken down into O2 plus nascent oxygen. This nascent oxygen reacts with colorful matter and converts it into colorless matter, and that is only called bleaching, right? So it is used for bleaching what? बता चुका हूँ मैं. It is used for bleaching mainly the starch, flour, oil. In uses I have already told you. अब सबसे important point, oxidation of metals में, when it reacts with mercury, तो you get mercurous oxide. लिख लेना. What do you get? Mercurous oxide plus O2. Now everyone knows mercury forms a meniscus. In thermometer everyone has seen. Is it clear? And it does not stick to the glass. Everyone knows that. But जब mercury plus ozone react होते हैं तो what you get? ध्यान से सुनो, mercurous oxide मिलता है. This mercurous oxide dissolves in mercury. Mercury में dissolve हो जाता है. And due to that mercury loses its meniscus and it sticks to the glass surface and it appears like a tail, and that's why the phenomena is known as tailing of mercury. बहुत easy है. Mercury does not stick to the glass, but जब mercurous oxide form होता है इस reaction में, it mainly makes the mercury to lose its meniscus and it sticks to the glass, and this is called tailing of mercury. ये साल के ISC का क्वेश्चन था, so everyone has to know that well.
ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, 3 है आपके पोर्शन में, तीनों के तीनों बहुत इजी है, तीनों के तीनों को आप पानी में डालोगे। एंड जस्ट रिमेंबर, आई पीयूष शर्मा, मेरा नाम याद रखो, आई पीयूष शर्मा। ये मैं आपको बहुत सारे नॉन मेटल्स के टाइम बताऊंगा, कभी कभी सीपीएस आता है तो आई केमिस्ट्री पीयूष शर्मा, यहाँ पे आईपीएस है तो आई पी एस भी आप याद रखते हो, इंडियन पुलिस सर्विस, और आई पीयूष शर्मा, वट एवर यू रिमेंबर, प्लस वाटर प्लस ओजोन। बताया हुआ ऑक्सीजन तो मिलेगा। अब दूसरा इसमें याद रखने लायक क्या है, तीनों के तीनों एसिड देंगे, आयोडिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फोरिक एसिड इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड आयोडिक एसिड HiO3, एंड ऑफ कोर्स O2 तो सब में कॉमन है। सो आई होप दिस रिएक्शंस आर क्लियर टू एवरीवन. Please copy it down and then we'll go for the last chemical properties of ozone. Now the last chemical property of ozone, ozone when reacts with different compounds, right, then what are the different products? अभी भी right hand side में O2 is common, so you don't have to worry about कि O2 मिलेगा कि नहीं, सब में O2 common है. पहला reaction, when it reacts with black lead sulfide, it is converted into white lead sulfate plus O2, and this is very important use also, where the ozone can be used to restore the color of the paints. So paintings में कभी कभी black color add हो जाता है या subsidize हो जाता है because of some what we call it, the reaction in air. ठीक है, तो black color जो हो जाता है उसको आप restore कर सकते हो again into white color by O3. If ozone reacts with Ki plus water, very important reaction, star मारा हुआ है, you get KOH plus iodine plus O2. क्यों स्टार मारा है? बिकॉज दिस आयोडीन, लिख लेना, दिस आयोडीन इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन. क्वांटिटेटिव, कितना क्वांटिटी ओजोन यूज हुआ है आपको ये रिएक्शन से आप बता सकते हो. तो आयोडीन जो मिलता है दैट यू टाइट्रेट इट विथ सोडियम थायोसल्फेट, एंड दोनों के टाइट्रेशन से आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लीज रिमेंबर इट. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ HCl, तो ऊपर वाला याद है तो आयोडीन के बदले क्लोरीन, O2 इज O2, QH है यहाँ पे वाटर. सो दैट इज द रिएक्शन विथ HCl. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम मैंगनेट व्हिच इज ग्रीन इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सो ग्रीन से कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में इनटू पोटेशियम पर मैंगनेट. ये पोटेशियम मैंगनेट है, ये पोटेशियम पर मैंगनेट. सो पोटेशियम पर मैंगनेट, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जिसका स्ट्रॉन्ग है ये सब बहुत इजी लगेगा, प्लस KOH प्लस O2. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटल 1 2 3 4 रिएक्शंस विद कंपाउंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट आयोडीन वाला है और सेकेंड ये कलर चेंज का है. And this is of course used in restoration of paintings color when it turns black due to PBS. So that completes your third lecture and that also completes ozone. So see you in my next lecture.